Hello students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is the changing earth, and in this chapter you will learn about folding, faulting, volcanoes, earthquakes, case study earthquake in Japan in 2011. Mind opener, choose the correct option. What is the shaking of the earth's surface caused by sudden movement in the earth's crust called? It is the earthquake. The surface of the earth is not uniform. It consists of many irregularities in the form of mountains, plateaus and plains. Our earth is dynamic in nature. The landforms that we see today are the result of changes taking place over millions of years. Scientists believe that millions of years ago all the continents were joined together to form a supercontinent called Pangaea. तो earth uniform नहीं है. Everybody knows mountains, plateaus, different kinds of physical features are there. और बहुत टाइम पहले जब explosion हुआ, earth की formation हुई, तो जितने भी continents थे, they were just a part of one landform which was known as Pangaea. The lithosphere consists of many plates called lithospheric plates. Due to the forces of the interior, these plates started drifting away from each other, and the theory of continental drift was propounded by Alfred Wegener, a German meteorologist. Recently, the theory of plate tectonics, replaced by the theory of continental drift. Lithospheric plates are made up of small and big plates consisting of continents and ocean basins, and the large-scale movement of these plates due to the forces of the interior of the earth is called the earth movements. The forces generated in the interior of the earth are called the internal processes or endogenic processes or forces, where the forces operating on the earth's surface are called the external processes or exogenic forces. Internal processes bring about a certain and abrupt changes like earthquakes and volcanic eruptions. External processes bring about slow changes extending over millions of years like action of running water, winds, glaciers and waves. तो lithosphere जो है इसमें आपका lithospheric plates बहुत सारी आती हैं, उनके इंटरैक्शंस कॉन्स्टेंटली होते रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस अर्थ के सरफेस पे आपको देखने को मिलते हैं. इनिशियली जो पैंजिया था, विच वाज अ सुपर कॉन्टिनेंट, अल्फ्रेड वेगनर ने एक थ्योरी दी थी दैट कॉन्स्टेंटली कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट आपका होता रहता है, सारे कॉन्टिनेंट्स आपके स्प्रेड अपार्ट होते रहते हैं, जिसकी वजह से प्रेजेंट डे कॉन्टिनेंट्स आपको देखने को मिलते हैं. बाद में अल्फ्रेड वेगनर की ये जो थ्योरी थी वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने रिप्लेस कर दी थी. नाउ यू हैव टू काइंड्स ऑफ फोर्सेज, वन इज एंडोजेनिक फोर्सेज, अनदर वन इज एक्सोजेनिक फोर्सेज. एंडोजेनिक फोर्सेज जो होती हैं वो अर्थ के सरफेस के नीचे लाई करती हैं, जिसकी वजह से वोल्केनिक इरप्शंस, अर्थक्वेक ऐसी चीजें आकर करती हैं. और एक्सोजेनिक फोर्सेस जो होती हैं वो अर्थ के सरफेस के ऊपर होती हैं बिकॉज ऑफ द वाटर रनिंग, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस, और ये होने में बहुत लाखों साल लग जाते हैं. Now NEP quest, why the surface of the earth is not uniform? The surface of the earth is not uniform because different kinds of forces, for example exogenic and endogenic forces are acting upon it, and because of that अलग-अलग changes occur करते हैं. Now let's study about folding. Folding is the wave-like upliftment of sedimentary rocks due to horizontal forces from two opposite sides. This happens when a part of the crust is pushed against another. It leads to the formation of fold mountains. A simple fold mountain has downfolds or valleys called synclines and upfolds or ridges called the anticlines. Some mountains are called new fold mountains or young fold mountains as they were born only 60 to 70 million years ago. They are very high with sharp pointed peaks, deep valleys and parallel ranges, and the Himalayas are young fold mountains. Old fold mountains were formed in a similar manner but more than 200 million years ago. These have been eroded and worn down, resulting in the rounded peaks. The Aravallis of Rajasthan and the Urals of Eurasia are good examples of old fold mountains. तो old fold या generally fold mountains आपके कौन से होते हैं, जहाँ पे आपके जो दो प्लेट्स होती हैं when they subside, ये कन्वर्ज हो जाती हैं, एक प्लेट सबसाइड कर जाती है और एक ऊपर की तरफ उठ जाती है, एंड देन दे कॉन्स्टिट्यूट और दे मेक द फोल्ड माउंटेन्स. यंग फोल्ड माउंटेन्स भी एक टर्म होती है, यंग फोल्ड माउंटेन्स जो आपके सिर्फ 60-70 लाख साल पहले ही बने होते हैं, रिसेंटली बने होते हैं, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज द यंग फोल्ड माउंटेन्स. अरावली इन द राजस्थान एंड उरल्स आर द गुड एग्जाम्पल्स ऑफ फोल्ड माउंटेन्स. Then faulting. Faulting is the breaking or cracking of old, hard, brittle rocks. Such types of rocks are present in Asian plateaus like the Deccan Plateau of India and the Plateau of East Africa. Due to tension, the opposite of compression, vertical faults or cracks are created along the lines of weakness in the crust. When a part of the crust between the cracks sinks down, the valley is formed. Such a sunken valley is called a rift valley or a graben. Sometimes the land between the rocks is uplifted by internal forces, forming a block mountain or host, and a very good example of rift valley in India is the Narmada and Tapi valleys, with the Vindhya and Satpura ranges standing as the block mountains. अब आपका faulting में बिल्कुल opposite हो जाता है fold mountains का. Fold mountains में convert होती थी rocks, faulting में आपका diverge.
अलग हो जाती हैं। उस अलग होने की वजह से बीच में आपकी वैली बन जाती है और साइड में आपके ब्लॉक माउंटेन्स अलग अलग प्रोसेसेस की वजह से क्रिएट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल नर्मदा एंड तापी वैलीज आर गुड एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्ट वैलीज, एंड उनके साइड में ही आपके सतपुरा रेंजेस के ब्लॉक माउंटेन्स दे आर स्टैंडिंग अपराइट। Then we have the volcanoes. A volcano is an opening in the earth's crust through which molten magma or lava erupts suddenly. This lava accumulates around the vent and forms a conical hill or a mountain with a funnel-shaped depression or opening at the top, which is known as a crater. As an eruption takes place, the erupted material accumulates around the crater and forms a conical hill known as a volcanic cone. These eruptions can be either explosive or quiet. An explosive eruption occurs through a narrow vent and lava accumulates around the crater, forming a conical shaped hill like Mount Fujiyama of Japan and Mount Vesuvius in Italy. A quiet eruption results in the formation of plateaus like the Deccan Plateau. In such eruptions, lava oozes through several narrow cracks and spreads over a large area, forming lava sheets. फिर आपका volcano अर्थ की सरफेस पे ये वो ओपनिंग होती है, एक माउंट लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, बट इसकी जो ओपनिंग होती है उससे बहुत ही हॉट मैग्मा बाहर निकलता है। द लावा इज द मैग्मा ओनली, बट मैग्मा जब अंदर होता है तो उसे मैग्मा बोला जाता है। यही मोल्टन मटेरियल जब बाहर आ जाता है अर्थ के सरफेस पे, देन वी कॉल इट लावा। ये बाहर की तरफ निकलता है, इट सॉलिडिफाइज, और ये जो ओपनिंग सी होती है वी कॉल इट द क्रेटर, गड्ढा सा जो बन जाता है वी कॉल इट द क्रेटर। माउंट वेसुवियस इन इटली, माउंट फूजियामा इन जापान आर द एग्जांपल्स ऑफ योर वोल्केनिक इरप्शन की वजह से जो आपके हिल्स बन जाते हैं। Now, facts on volcanic eruptions can trigger tsunamis, floods and earthquakes. Ash from volcanic eruptions can travel more than 33 kilometers above the earth's surface. तो volcanic eruptions जब होते हैं बहुत ज़्यादा high intensity के हो जाते हैं, they can also trigger tsunamis, floods and earthquakes of different intensities, various intensities. And एक लावा जब erupt करता है तो earth की surface के ऊपर आके 33 kilometers तक ये फैल सकता है। Now, types of volcanoes. A volcano is active if it is erupting lava, generating seismic activity or releasing gas. Stromboli and Etna in Italy are active volcanoes. A volcano is dormant if it has not erupted for a very long time but could erupt again in the future. Vesuvius in Italy is a dormant volcano. If a volcano has been dormant for more than 1000 years, it is termed as extinct. Kilimanjaro in Africa and Rainier in the USA are extinct volcanoes. तो volcano जब erupt करता है, seismic gases produce करता है, then we call it the active volcano. For example, Stromboli and Etna in Italy are the active volcanoes. उसमें से lava erupt होता रहता है. Then you have the dormant volcanoes. Dormant का मतलब होता है जो चीज़ होती है बट छुपी हुई होती है. तो dormant volcanoes जो होते हैं बहुत सालों तक erupt नहीं हुए होते हैं बट चांसेस होते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि erupt हो सकते हैं. For example, there is another type of volcano which is a dormant, which is Vesuvius in Italy. Then you have the extinct volcanoes. 1000 साल तक अगर कोई volcano erupt नहीं करता है, then we call it the extinct volcanoes, यानी कि उसमें से eruption के कोई chances नहीं है. And Kilimanjaro in Africa is the example of extinct volcano. Now, most volcanoes occur where two plates meet. When plates move apart, causing a gap, hot molten rock called lava rises up between them. This type of volcano occurs on the ocean floor and is generally invisible. Sometimes volcanoes also form in the middle of the plates, which are called the hotspots. These are the places that are connected by channels to the hot mantle of the earth. Then you have multiple kinds of volcanoes जहाँ पर आपके most volcanoes जो होते हैं they meet at a certain place. When the plates move apart causing a gap, वहाँ से फिर आपके नए टाइप के eruptions होते हैं, लावा बाहर की तरफ आ जाता है, that's how the volcanoes start to erupt together. अब कुछ ऐसी locations होती हैं जहाँ पे बहुत frequently ये volcanic eruptions होते रहते हैं, we call them the hotspots. Then earthquakes. An earthquake refers to the passage of vibratory waves on the Earth's surface caused by natural forces. An earthquake is the result of a sudden release of energy in the Earth's crust that creates seismic waves. The exact point within the Earth from where an earthquake starts is called focus, and the point on the surface of the Earth directly above the focus is called the epicenter. Damage is greater if the focus is close to the surface. If the focus is far from the surface, little damage occurs because the energy has to travel a long distance, and earthquake tremors are recorded by an instrument called a seismograph. The magnitude or intensity of an earthquake is measured on the Richter scale, which range from 0 to 9, and earthquakes of magnitude 7 and above are very destructive and cause significant damage to life and property. अब earthquake का मतलब क्या होता है? Quake का मतलब होता है shake करना. So whenever the earth shakes because of different kinds of activities,
जनरली प्लेट जब जो अंडर ग्राउंड प्लेट्स होती हैं वो जब या तो ड्रिफ्ट अपार्ट करती हैं या फिर आपस में टकरा जाती हैं, तब ये सिस्मिक एनर्जीज रिलीज होती हैं। जब बहुत ज़्यादा सरफेस के नीचे से होता है तो ज़्यादा इंटेंसिटी का अर्थक्वेक नहीं आता है, बिकॉज उसको ऊपर सरफेस तक ट्रैवल करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, तो ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं होती है। बट अगर शैलो फोकस का अगर अर्थक्वेक आएगा तो वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी का आता है, बिकॉज ज़्यादा देर तक एनर्जी को ट्रैवल नहीं करना पड़ता है। तो इंस्ट्रूमेंट विच एक्चुअली मेजर्स कि कितने इंटेंसिटी का है या रिकॉर्ड करता है अर्थक्वेक को, इट इज नोन एज अ seismograph. Now, most of the world's earthquakes occur in the belts of young fold mountains. These are areas where the earth's crust is weak and volcanic eruptions take place frequently. अब ज़्यादातर वर्ल्ड के earthquake वहाँ पर आते हैं जहाँ पे young fold mountains होते हैं, because वहाँ पर आपका टेक्टोनिक प्लेट इंटरैक्शंस बहुत कॉन्स्टेंटली होता है, वोल्केनिक eruptions बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरा होता है earthquakes आने का. The two major earthquake-prone belts of the world are Circum-Pacific Belt, a circular belt around the Pacific Ocean, and the Mid-World Mountain Belt extending from eastern Europe to China, passing through Central Asia, Pakistan and India. Earthquakes are among the worst natural disasters, and the loss of human life and material is often very high. They cause the surface of the earth to shake, may result in cracks or subsidence in places, buildings collapse, rivers change course, and transport, power and water supply lines disrupted, and gas lines may break, which can result in fire. Earthquakes under the sea can cause tsunamis, giant waves. तो earthquake जब बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी का आ जाता है तो हर जगह तबाही में करके चला जाता है, वहाँ की सारी कम्युनिकेशन नेटवर्क चला जाता है, वायर्स सारे ब्रेक डाउन हो जाते हैं, वायर ब्रेक डाउन होते हैं तो आग लगने के चांसेस रहते हैं, जो रिवर्स होती है उनका जो कोर्स होता है, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहे होते हैं वो चेंज हो जाता है, और यही अर्थक्वेक जब बहुत बड़े ओशन या सीज में आ जाता है तो वहाँ पर फिर सुनामी आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं. Now there's a case study, the earthquake which happened in Japan in 2011. Earthquakes are very common in Japan, but the 2011 earthquake was the devastating in recent times. The most tragic aspect was that this earthquake caused a tsunami, leading to significant loss of life and the displacement of hundreds of people in Japan. The earthquake that struck the Tohoku region on 11th of March 2011 is one of the deadliest in recent history. It measured 8.2 on the Richter scale. The Japanese archipelago is located in an area where several continental and oceanic plates meet, and this is why Japan experiences frequent earthquakes along with the presence of many volcanoes and hot springs. Disaster struck again on 12th March when 26 hours after the earthquake, an explosion in the reactor number 1 at the Fukushima Daiichi nuclear power station caused one of the buildings to collapse. By 22nd March, more than 8,600 people had been confirmed dead. Number was expected to rise with more than 13,000 people still missing. तो 2011 में, which is not too far, अभी recent टाइम की ही बात है, जापान में anyways बहुत ज़्यादा earthquakes आते रहते हैं, बट ये 8.2 मैग्नीट्यूड का earthquake था. इसके साथ साथ सुनामी भी ट्रिगर हो गई थी, जिसकी वजह से ऑलरेडी बहुत सारा लाइफ और प्रॉपर्टी डैमेज हो चुका था. आफ्टर दैट द जापानीज आर्कीपिलागो, जहाँ पे बहुत आर्कीपिलागो इज अ प्लेस जहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स एक ही जगह पे रहते हैं, तो वो आर्कीपिलागो में भी एक क्रेटर था, उससे भी वोल्केनिक इरप्शन हो गया था, उसकी वजह से अलग न्यूक्लियर जो एक आपका न्यूक्लियर पावर स्टेशन था वहाँ पर फायर का ब्रेकडाउन हो गया था. सो लॉट ऑफ सीरीज ऑफ कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स हैपेंड इन जापान आफ्टर दिस अर्थक्वेक, जिसकी वजह से 8600 की कंफर्म डेथ तो थी ही, ये नंबर तो था ही, और वो नंबर भी राइज होने के लिए बिल्कुल तैयार था. 13,000 से लोग स्टिल मिसिंग थे, एंड दिस वाज द रीसेंट टाइम्स जब बहुत बड़ा अर्थक्वेक किसी भी जगह पे आया था. Now turn back, drift, a slow movement, sunken, having settled to a lower place, dormant, not active for some time, and extinct, no longer existing. Flashback, the surface of the earth consists of many irregularities in the form of mountains, plateaus and plains. There are two kinds of forces that affect the earth's crust, exogenous forces and endogenous forces. A volcano is a place on the earth's surface where molten rocks, gases and debris erupt through the earth's crust. Volcanic eruptions cause great damage and loss of life and property. There are three types of volcanoes: active, dormant and extinct. An earthquake is the result of a sudden release of energy in the earth's crust that creates seismic waves. The magnitude of an earthquake can be measured on the Richter scale, and earthquakes can cause immense damage. So these were certain natural disasters kind of a thing which happens on the surface of the earth. किस reason से होते हैं, that we have studied, and on the basis of that, evaluation time. Fill the given OMR sheet to choose the correct option. The plates forming the earth's crust are called the lithosphere plates. Fill in the blanks. Our earth is solid in nature. Write T for true and F for false against each statement. Folding is the breaking or cracking of old, hard and brittle rocks. This is absolutely incorrect because it is faulting. So this is false. Very short answer type questions. What is the earth's surface made up of? Earth's surface is made up of lithospheric plates, and upon that we have different kinds of rocks and minerals also.
Short answer type questions give examples of different types of volcanoes. So we have basically 3 types of volcanoes. These are extinct volcanoes, dormant volcanoes and active volcanoes depending upon their eruptibility. Log answer type questions. What do you mean by theory of the continental drift? Explain in detail. So continental drift theory is a theory which was proposed by Alfred Wegener, a German meteorologist, जिनके हिसाब से पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट था पैंजिया, कोई ब्रेक्स नहीं थे, एक ही लैंड मास था. कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट होते गए बिकॉज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्मिक एक्टिविटीज एंड प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जिसकी वजह से प्रेजेंट डे आपका एशिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स आपके बनते गए. कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट होते गए, अलग अलग होते गए. Skills enhancing corner. There's a project. Imagine you were living in an earthquake-prone area. What precautions would you adopt to live in a secure environment? Make a PPT on the topic. Study the conditions in Japan to take the clues. अब ये आपको प्रोजेक्ट खुद से बनाना है. You have to imagine कि आप ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ बहुत ज़्यादा earthquake होते हैं. क्या precautions आपको लेने चाहिए? Take the clues from your Japan case study and make a project on that. And then you have the NCERT corner. Certain questions alongside the answers also given with the explanations of that. Please go through it. With that, we are done with this chapter. Go through the chapter properly, revise it properly, and rest of the exercise questions, please do it yourselves.